नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी की प्यारी संगत, ब्लेस संगत, रवि रवि राय अंकल, अन्नू राय आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए तनुज कपूर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरुजी आंटी, ओवर टू यू। वेलकम। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपको प्यार भरी नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से सुनने वाली सभी संगत को और बड़े प्यार से, दिल से अनु अंकल एंड रवि अंकल एंड अनु आंटी जी, आप दोनों का स्वागत है। पहले तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये सिमरन और सत्संग की घड़ियां बख्शी, हमको बहुत सुंदर पल बख्शे हैं। सिमरन, वी ऑल नो, महाराज शब्द कीर्तन सुना के हमें अपने ध्यान में रखते हैं। एंड सत्संग शेयरिंग इज दैट टाइम ऑफ द संगत वे गुरुजी's blessings are overflowing, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी, जैसे हम सभी जानते हैं। So we are all looking forward for our blessings and of course the beautiful journey जो रवि अंकल एंड अनु आंटी की गुरु महाराज के साथ रही हैं, जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने आपके ऊपर और आपकी फैमिली पे बरसाई हैं। Because we all know that it is motivating not only for the new sangat but also all of us, because जब गुरुजी चोले में थे, so we only knew or even kind of knew by face जो संगत महाराज के दरबार में आती थी, whether it was चंडीगढ़, जलंधर या फिर दिल्ली या बड़े मंदिर। बट बियॉन्ड दैट कोविड और उसके बाद जो जूम सेशंस के थ्रू Guru Maharaj has brought for us blessings from all over the world. और हम, we are so amazed that in so many beautiful ways, so many different ways, Maharaj has blessed his Sangat, which is settled all over the world. So this is motivating for and also is inspiring. It is hope giving to all of us who listen. And also sometimes we get reminded that जब संगत अपने experiences शेयर करते हैं, blessings शेयर करते हैं, so we feel that महाराज ये तो मुझे याद ही नहीं था, you blessed us also with this. And we also realize that physically हम महाराज को जिस भी साल में मिले हों, but actually when हम दूसरों के सत्संग शेयरिंग सुनते हैं, we realize कि महाराज ने तो हम पे मेहर बहुत पहले से की है। इस जन्म में भी मिलने, फिजिकल मिलने से पहले कब से महाराज is monitoring us and showering us with his love. And we don't know about the past life, but we are extremely grateful and fortunate that Maharaj has blessed all of us with Simran and Satsang sharing. So, इन्हीं words के साथ auntie and uncle, I welcome you all on behalf of the Multilingual Sevadar team. And please आप लोग आइए, unmute yourself please, and please share your blessings with all of us. शुक्राना महाराज। जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जो इस वक्त सुन रही है उनको नमस्कार। एंड सबसे पहले तो गुरु जी का कोट कोट शुक्राना कि अपना गुणगान करने का ये मौका दिया गुरु जी ने। और गुरु जी से यही प्रार्थना है कि जो वो चाहें और वो सब याद कराएं जो कुछ बीता है, क्योंकि जैसे कई बार कई चीजें रैंडम याद आती हैं, कुछ पहले कुछ बाद में। सो जैसे जैसे गुरु जी की कृपा हो तो ये सत्संग को हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक्स टू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, जो पुराने सब सत्संग यहाँ पे सुनने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। एंड हमारी जर्नी गुरु जी के साथ जलंधर से शुरू हुई थी 95 से। एंड जलंधर जब
जर्नी शुरू हुई तो हम लोग किसी का मैसेज लेके गए थे गुरुजी के पास 94 में। सो वो कोई पूना के आर्मी ऑफिसर थे, संगत थे, उनका गुरुजी ने 4 साल पहले कैंसर क्योर किया था। एंड फिर आफ्टर दैट फॉर 4 years दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद गुरुजी, और उनका कैंसर दोबारा रिलैप्स हुआ। तो उनकी वाइफ का मैसेज किसी के थ्रू हमारे पास पहुंचा था कि जाके गुरुजी को ये मैसेज दीजिए कि कृपा करें। सो हमारा जो काम था जाके मैसेज देना, वो तो पूरा कर दिया, पर वहां से वो बहाना था हमारी जर्नी शुरू होने का। सो वहां से हमारी जो जर्नी शुरू हुई, गुरुजी की बहुत मेहर रही कि वो आज तक उन्होंने अपने चरणों में लगाए रखा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उनके चरणों से कोई जुड़ा नहीं रह सकता। और जालंधर में जब हम पहली बार गए तो गुरुजी का दरबार बिल्कुल एक दुनिया का अलग अनोखा दरबार। जाके ऐसे लगा कि कोई और ही दुनिया में आ गए हैं, ये आम दुनिया तो है नहीं। गुरुजी भी आम संत महात्मा की तरह नहीं थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। और धीरे धीरे फिर गुरुजी की समझ किसी को एकदम से तो आती नहीं है। तो हमारे को भी उस वक्त ये नहीं पता था कि गुरुओं के पास गुरु कैसे होते हैं, और गुरुओं के पास क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो जाके बहुत अच्छा लगा, और गुरुजी के दरबार में बैठना, शब्द लगे होते थे। और जालंधर में ऐसा होता था कि सारा दिन ही शब्द कीर्तन चलते थे। गुरुजी शाम को दिन में भी मिलते थे, एंड हॉल भर जाता था जालंधर मंदिर में, और गुरुजी अपने आप आज्ञा दे के खाली हो जाता था। तो ओनली गुरुजी यूज्ड टू मैनेज द होल थिंग। एंड फिर चाय प्रसाद वहाँ जालंधर मंदिर में मिलती थी, जैसे आज भी एम्पायर स्टेट हर जगह मिलती है चाय प्रसाद, और फिर लंगर मिलता था उस पे। पर वो डिपेंड करता था कि लंगर का टाइम है तो संगत को लंगर होती थी, नहीं तो चाय प्रसाद के बाद कईयों को गुरुजी 2 घंटे बाद आज्ञा दे देते थे, कईयों को सारा सारा दिन भी बिठाते थे। सो फिर उसके बाद गुरुजी बीच में दिल्ली चले गए। और फिर 1 डेढ़ साल के बाद गुरुजी वापस आए, एंड फिर दोबारा हमारे गुरुजी के पास दर्शन हुए। एंड जब दोबारा गुरुजी के पास दर्शन हुए तो आई वॉज वेयरिंग स्टोन पहना हुआ था मैंने, गोमेद का। एंड गुरुजी कहने लगे कि एक ही पाया तू। सो मैंने बोला गुरुजी ये मैं गोमेद स्टोन डाला है हेल्थ के लिए, कहने उतार इनू, नहीं पाई था। सो मैंने जैसे गुरुजी ने बोला उसी वक्त उतार के अपनी पॉकेट में डाल दिया। एंड वो मैंने थोड़ा अपने बैक प्रॉब्लम के लिए पहना था। एक कोई ब्लाइंड पर्सन थे, सो वो सिर्फ हाथ देखते थे ऐसे। पहले उनके गुरुजी के पास जाने से पहले उनके पास गए थे तो उसने सजेस्ट किया कि आप ये पहन लो, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और मेरा हेल्थ का ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई इशू हो ही जाता था मेरे को। सो व्हेन गुरुजी सेड कि उतार इनू, मैं उतार देता। एंड आफ्टर दैट आई हैड क्वाइट अ लॉट, मेरी बैक की काफी प्रॉब्लम मुझे हुई। तो मन में एक बार ये थॉट भी मेरे आया था कि ये तो गुरुजी ने मैंने पहनी हुई थी, मेरी उतरवा दी और मेरी बैक प्रॉब्लम और हो गई है। बट खैर उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा, और गुरुजी वापस आ गए जालंधर। तो फिर रोज गुरुजी के दरबार में जाना, मेरी बैक प्रॉब्लम थी मेरे को। एंड जब दरबार में जाते थे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाके बैठ जाऊं, और जब गुरुजी रूम से बाहर निकल के आते थे तो मैं नीचे बैठ जाती थी। सो वन डे, काफी दिन ऐसे ही चलता रहा, मैंने बड़ी मुश्किल से नीचे बैठना, फिर गुरुजी आना, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होते जाना। तो गुरुजी ने मेरे को फिर काफी दिनों के बाद एक दिन, वो ऑपरेशन रूम कहते हैं जालंधर में, छोटा कमरा, उधर बुलाया। एंड गुरुजी के आसन पे एक सिल्वर का स्पून होता था, बड़ा चम्मच होता था। एंड गुरुजी के हाथ में वो चम्मच था। और गुरुजी ने रूम में बुलाया तो मेरे को बोलते लेट जा। तो जब मैं लेट गई तो मैंने जो डायरेक्शन जिसमें मैं लेटी, सो गुरुजी ने पॉइंट आउट किया कि सौर्यवल मुंह करके लेट। Then I changed my, I did not know what is Sorya the direction or Pekya the direction, so I changed my direction. And Guruji pressed his both hands with spoon on my back. इतना जोर का प्रेशर था। और फिर उन्होंने वो प्रेशर दिया, उसके बाद कहने लगे कि खड़ी हो जा। जब खड़ी हुई तो गुरुजी मुझसे अभी बात ही कर रहे थे कि गुरुजी ने मेरी एक आर्म को झटका, फिर दूसरी आर्म को झटका, और कहते जा ठीक हो गई,
एंड 10% हल्दी दूध पीला ठीक हो जाएगी. After that, I had haldi doodh as instructed by Guruji, and Guruji's meher kirpa ki after that I could go to Hemkund Sahib. So ये गुरुजी की मेहर ही थी, और तब से लेके आज तक मेरी बैक मैनेज हो रही है बहुत अच्छी तरह. दो जो लेटेस्ट मेरा डायग्नोज जो हुआ, इट्स क्वाइट दिस थिंग कि आई हैव गॉट अ एंटेरियोलिथिस प्रॉब्लम. उस वक्त मुझे नहीं मालूम था, उस टाइम थी भी नहीं. उस टाइम थी भी नहीं थी. पर गुरुजी टच वुड अभी तक उनकी ब्लेसिंग से सब मैनेज करा रहे हैं. तो दिस इज ऑल गुरुजी की कृपा. ऐसे गुरुजी ने कई मेरे हेल्थ इश्यूज तो मेरे गुरुजी ने बहुत ठीक किए. ही क्योर्ड माय एक्जिमा आल्सो. एंड वंस आई हैड डेवलप्ड इन जलंधर ओनली, आई हैड डेवलप्ड दिस आई प्रॉब्लम, जिसमें कि जब जून का महीना होता था, मई जून में, तो हीट से मेरी आईज रेड हो जाती थी. एंड गुरुजी आस्क्ड मी कि अखज शहद पा ली, और जब मैंने शहद डाला तब से लेके आज तक उसके बाद दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं. सो गुरुजी के बड़े सहज ही बातें होती थी. कोई ऐसा नहीं लगता था उस वक्त कि हाँ, गुरुजी से डर भी नहीं लगता था. भाव भी बड़ा था गुरुजी के साथ. और जब आसन पे आके बैठ जाते थे तब बिल्कुल डर भी लगता था. एक ऐसा प्यार वाला रिश्ता था गुरुजी के पास कि शाम को रोज मन यही करता था कि चलो गुरुजी के पास जाएं. और गुरुजी जब आज्ञा देते थे तो हम लोग अपने आप को छुपाते थे कि गुरुजी कहीं छुट्टी ना दे दें. सो उसी टाइम पे आपकी आई प्रॉब्लम. 95 में. हाँ, 95 में. 95 में लाइक आई थिंक पहले अनु और मेरी मदर ये गई थी, जैसे बताया, मैसेज लेके किसी संगत का पुणे वालों से. तो 95 में मुझे मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम शुरू हुई थी. डॉक्टर्स को उसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा था, और मदर ने मेरे से बात की, कैसे इधर संत हैं, गुरु हैं, वहाँ चलते हैं, वो ठीक कर देंगे. तो आई रिफ्यूज टू गो. मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तब भी और आज भी सही गुरु और सही संत तो एक ही कोई होता है, बाकी सब तो ऐसे बैठे होते हैं, तो नहीं मालूम पड़ता. तो मैंने कहा मैंने इन चक्रों में नहीं पड़ना. तो डॉक्टर्स को दिखा दी, जो किस्मत में होगा वो होगा. फिर हफ्ते के बाद में दोबारा मम्मी ने मुझसे बात की कि चलते हैं. तो मुझसे दोबारा ना नहीं हुई. तो दैट्स हाउ आई फर्स्ट टाइम वेंट टू जलंधर मंदिर विद माई मदर. मुझे भी याद है, सुबह के 10:30 का टाइम होगा वो. सो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट घड़ी, कि उनके दरबार में पैर रखा. तो दैट टाइम नॉट विलिंगली, बट मे बी उनकी ऐसी ही मर्जी थी. तो उन्होंने मेरे, मतलब आई जस्ट टेल यू दिस इन वेरी शॉर्ट, इन अ बिगर पिक्चर. उन्होंने मेरी आई प्रॉब्लम ठीक कर की. asked me to get some pan pattas. He blessed the pan pattas. I was asked to keep it overnight for just for 1 hour before I go to sleep, and the next day morning to uh, put them in a flowing water, जल प्रवाह. तो जैसे मैंने सोने से पहले 1 घंटा से आंखों पे रखी, पत्ते हटाए, तो मेरी जो लेफ्ट आई की विजन में थोड़ा ना स्क्रीन आ गई थी, वो सब हट गई. फिर नाउ आई फास्ट फॉरवर्ड टू 2000, आई थिंक 2 और 3 की बात होगी. दिल्ली एम्पायर स्टेट में गुरु जी साथ बैठे थे. गुरु जी के सेवा करने का मौका मिला हुआ था. तो एक संगत कोई आई, तो उन्होंने माथा टेका. तो गुरु जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि मिलो, दोनों पर आप ब्लाइंड केस थी. तो दैट मेड मी रियली थिंक कि 95 जब मैं गया हूँ तो मेरी लेफ्ट आई गुरु जी ने ब्लेस की. यस, अगर वो ठीक ना होती तो आई वुड हैव टर्न ब्लाइंड, यस फॉर श्योर. माई यंगर ब्रदर had met with an car accident in 93, एंड उसकी एक आंख तो एकदम डैमेज हो गई थी पूरी. दूसरी आंख भी काफ़ी डैमेज थी, विजन आने की कोई चांस नहीं था. बट इट वाज दैट टाइम थॉट कि कोई मिरेकल ही हुआ है कि उसकी उस आंख में थोड़ी विजन आ गई.
ये बात गुरुजी जब 2002-3 में बताई कि दोनों भाई ब्लाइंड केस थे, सो इफ वी थिंक कि हम गुरुजी के पास, जैसे अनु बोल रही 94 में गई है, मैं 95 में आया था, ब्रदर का केस तो 93 में हुआ था। सो कब से गुरुजी ने अपनी शरण में रखा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसी मामले में ऐसे जो आजकल नई संगत बोलते हैं, ये है वो कब से गुरुजी ने साथ पहले ही जुड़े हैं, इट्स वेरी हार्ड टू से, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू से कि हम कब से जुड़े हैं। तो औरों की तो बात नहीं छोड़ें। तो गुरु के साथ जर्नी शुरू हुई 95 में, जैसे मतलब सॉरी आगे भी बोल रहा हूँ, एज पर दिस लाइफ टाइम माई अंडरस्टैंडिंग। पहले पहले इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 year टू टेक ओ मत्था, क्योंकि in in my family that time, or our family, my parents and we as kids, dad was in army, so we were respectful to all the elders and everything. We were respectful to all the religions. पर किसी को ऐसे मत्था टेकने का we didn't have any tradition. ना कभी घर में मैंने मत्था टेका अपने पेरेंट्स को, ना ऐसे कुछ। यस, गुरुद्वारा साहब जाना, वहाँ मत्था टेक। तो आवर मत्था टेकना वॉज ओनली फॉर गुरुद्वारा साहब, ग्रंथ साहब जी के आगे, दैट्स इट। तो गुरुजी के पास गए तो उनको तो मत्था टेकते थे, मेरे से मत्था टेक नहीं हो रहा। आई हैड ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम इन माई हार्ट, पर मत्था नहीं टेका। तो फॉर फुल 1 year आई डिड नॉट टेक मत्था। मैंने आना, उनको प्रणाम करना और बैठ जाना। एंड ऑफ कोर्स गुरुजी इज महाशिव, महागॉड, ही डिड नॉट इवन मेक मी वंस फील बाय हिज बॉडी लैंग्वेज और एनीथिंग कि तू क्या समझता है अपने आप को, तेरे मैंने ये आंटी कर दी, तेरी वाइफ का शी हैड अ स्लिप डिस्क which he cured, and all that, and I'm not being thankful to him. But after 1 year, then I did take a matha and फिर दंडवत किया। चलो matha दंडवत ठीक है। तो गुरु साहब हमारी फिर एक बार ऐसे ही we were in that time we had moved to, we used to come then, जर्नी शुरू हुई। फिर मैं शिप पे भी ज्वाइन, I was in merchant navy and I had sailed as captain over there। मैं छुट्टी मतलब I was on ship, तो गुरु का बर्थडे था, and गुरुजी was in जलंधर मंदिर that time। तो मैंने शिप से एक प्रिंटर पे कार्ड प्रिंट किया और उसको मेल किया टू अनु कि तू जब मंदिर जाएगी तो गुरुजी को मेरी तरफ से ये बर्थडे कार्ड दियो। तो आज मुझे याद, पहले मुझे याद है कि मैं शायद ये शेयर नहीं किया होगा, तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे एक्सेप्ट किया नहीं किया, वो बहुत खुश हुए। तो यही दिखा था। फिर छुट्टी आए तो मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स गुरुजी शिफ्टेड टू पंचकूला। तो हम लोगों ने फिर जलंधर से पंचकूला आना गुरुजी के दर्शन करने। देन गुरुजी शिफ्टेड टू चंडीगढ़। तो एक दिन हमें बोलते कि आप इतने कार ले लो। Because that year we had moved our son to YPS hostel before that। तो हमारी प्लान थी उसको घर लेके आने की। वी वर लुकिंग फॉर रेंटल प्लेस इन चंडीगढ़ और मोहाली। तो हमने घर ले लिया। जब वो घर ले लिया तो गुरुजी तब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अब देखो ना, गुरुजी ने एक बात बोलनी, अगर आपने वो बात मान ली तो ठीक है, अगर आपने अपने दिमाग लगाया कि नहीं गुरुजी उस दिन कर लेंगे, तो इससे ठीक है। तो वी केम फ्रॉम जलंधर टू चंडीगढ़, गुरु दर्शन किए, आगे ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀ ਸੈਟ ਸਮ ਡੇ ਵਾਸ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਇਓ। सो आई इन माय विजडम थॉट कि सन इज इन हॉस्टल हियर, तो वीकेंड पे आएंगे, उसको भी मिल लेंगे और गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैं गुरु जी फ्राइडे सैटरडे आ जावांगे, कहते चंगा फे आंदे रहो। So we went back to Jalandhar. ਅਸੀਂ next rather than on Wednesday we came back on the weekend। Guruji was not there in 30 Saturday 33। और कहाँ गए उस टाइम तो किसी को नहीं मालूम था। तो देन गुरुजी हैड मूव टू एम्पायर स्टेट। ये अक्टूबर की बात थी 97। उसके बाद में गुरुजी के दर्शन 98 अप्रैल या मार्च में एम्पायर स्टेट में हुए। तो वो जो एक आध जो गुरु ने बात बोल दी, आपने मान ली तो मान ली,
अगर हम वेडनेसडे आ जाते तो दर्शन हो जाने थे, नहीं आए तो बोलते ठीक है फिर आते रहो। तो आई वॉज वर्किंग इन अ शिपिंग कंपनी, तो माई फाइनल प्रमोशन फ्रॉम चीफ ऑफिसर टू कैप्टन, काफ़ी साल लगे थे वो चीफ ऑफिसर बने हुए, तो वो हो नहीं रही थी। तो वो मैंने फिर सोचा कि फॉरेन कंपनीज में उसमें थोड़ा सा लेट होती है, तो आई ट्राई एन इंडियन कंपनी एंड जॉइन सम इंडियन फर्म। तो उन दिनों में एस आर वॉज इन शिपिंग, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि यस ओके यू कम ओवर, वी हैव एन वन ऑफ द शिप्स कैप्टन इज सनिंग ऑफ, यू कैन कम एंड टेक ओवर। तो आप बॉम्बे आ जाओ। आई थिंक दैट आई रिमेंबर इट वाज अनुज बर्थडे। Yes, 20. हाँ, सो आई वेंट टू दिल्ली फर्स्ट। Flights were from Delhi in that year. There was no flight Chandigarh, Mumbai like nowadays. तो गुरु जी मत्था टेका, मैं गुरु जी ऐसे मैं बॉम्बे फोन आया कंपनी से, तो ही सेड कुमया। Mhm. आई डिड नॉट रियलाइज बाय हिज वर्डिंग कुमया। कोई बात नहीं, फ्लाइट ली मैंने, वहाँ बॉम्बे पहुँच गया। एस आर वालों का कंपनी का गेस्ट हाउस था, बॉडी सी पे उन्होंने वहाँ रखा, मेडिकल्स हुए, सब कुछ हुआ। देन दे मेड मी मीट ऑल देयर टॉप मैनेजमेंट ब्रास, जो भी इनके होते हैं उन सबसे मुलाकात हुई। आई थिंक थर्ड और फोर्थ डे मुझे पर्सनल मैनेजर बोलता है कि देयर इज अ स्मॉल हिच। मैं क्या हो गया? बोलता है कि यू हैव टू जॉइन अस, देन आफ्टर 2 months वी 4 months वील गिव यू प्रमोशन। मैं कहा यू प्रॉमिस मी, तो मैं तभी तो आया हूँ मैं। बोलता नहीं, मैनेजमेंट थिंक्स कि तू भाग जाएगा। तो ठीक है, तो मुझे गुरु जी की बात याद आई, कुमया। Mhm. So I told him, see, you are changing your words, so I don't now believe you and your company. I'm not going to join you. मैंने एक कोर्स बॉम्बे में करना था शिपिंग का, मैंने कोर्स किया एंड आई केम बैक टू दिल्ली। So then in those wordings कुमया, it became very clear. Then going further in the same reference, जिस शिपिंग कंपनी में मैं उस टाइम काम कर रहा था, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी प्रमोशन की, तो वो उन्होंने बोला कि होएगी पर अभी नॉट से कब। लेकिन गुरु जी सेट कि तुम उत्थे ही जा। ओके, फिर मैं देन टोल्ड देम यस आई एम कमिंग बैक टू यू। आई वाज टू फ्लाई टू रॉटरडैम, एंड उस कंपनी के एजेंट्स वर रॉटरडैम, वी टू डू आवर मेडिकल्स ओवर देयर एंड देन जॉइन शिप इन नॉर्थ पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड में एक छोटा पोर्ट है स्कैपला। तो व्हेन आई वाज टू टेक फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू रॉटरडैम, मैं एयरपोर्ट पे, एज पर द मैसेज विच आई गॉट ओवर द ईमेल, at 5 o'clock flight है, तो with the timing 3 hours prior, I went to the airport. So that guy at security said कि ticket, so ये तो flight, this flight already gone, आप तो late आए हो। I was surprised, मैं क्या, they said 5 o'clock flight and I am here 1 or 2 in the morning, how can it be gone anyway? So, and that was the first flight I had ever missed in my life. In my 40 years of sailing, I had never missed a flight, I was never late. So I called up my company. They got mistaken. The flight time was 0050, 50 minutes past midnight. वो किसी ने लिखते हुए 0500 कर दिया। बट इसके पीछे भी एक कारण आई एम कमिंग टू, देन आई वाज टू फ्लाई नेक्स्ट डे। When I took my flight next day, in the same aeroplane, sitting with me was Sukhi aunty from Ireland and with her daughter. तो गुरुजी मस्ट हैव प्लान कि एक कल्ला जा रहा है, यदि एक मिस करा देंगे, नेक्स्ट डे उन्होंने जाना ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। So means in everything which happens, Guru used to say कि there is nothing by chance, there are no coincidences, it's all by choice। ਉਦੋਂ by choice ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। So now over the years ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ it is all his choice। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, it is all by his choice।
So now going ahead, the same story, same satsang, sorry. I ultimately went to Scotland. The ship was late. Ship was to come there in next 2 or 3 days. I was staying in a hotel. And that ship company had asked me to join as chief officer, which was my rank at that time. So a day before the ship came and the hotel in the morning time, Guruji gave me a dream darshan. He gave me a date, 13 ya 14. That's it. So my joining the ship was 11. not 11. It was early part of July or June, one of this month. So I joined the ship. When I went to join the ship, normally the officer you leave, you go and talk to him and you take over and he goes away. That chief officer, he was from Croatia. He said, we knew each other earlier. He said, I'm not signing off. I said, why? You're not relieving me. He said, then why am I on the ship? You're relieving captain. Oh, I never knew that. That was what I was trying to look for, you know. So then I made a parallel voyage from there to Caribbean. And that's where I reached. We reached there on 13th or 14th over there. And that captain who was there from Bulgaria, he signed off and I took over. So everything minute, all planning is all done by Guruji. And this is all when being done. I never asked Guruji in person that time, Guruji, meri promotion kara do. No. I was looking for one, I was trying for one, but it never immediately happened. And in a similar way, 96, somewhere around that, I was to go to Vancouver. That company I was working with that time had the head office in Vancouver. So I was to go to the office for about 2 weeks. And that time, Canada was the only country which would not accept additional added pages in your passport. If your passport book is finished in those days, there was a trend in India. They would stick those extra pages inside your passport and fold them up. So they said if there is no page vacant, we will not give a visa on those pages. So I had to, my passport was made from Mumbai. So I flew to Mumbai, met the passport officer. I said, this is the letter, I have to go and I need a new passport book. And okay, you give an application and by today evening, you get the new book. So as I walked away from his office and going towards the window to submit my file, I realized from my file I had dropped somewhere in between, in the office space inside. I had lost my passport. And that passport already had a valid US visa. And a valid US visa passport stolen was used in many ways. So I tried to look for it, name Enjimala. And then the one person came to me. सर आपका पासपोर्ट गुमा है मैंने कहा हाँ उसमें यूएसए वीजा भी है मैंने कहा हाँ है सर आप 10 मिनट वेट करो आपका पासपोर्ट आ जाएगा मैंने 10 मिनट वेट किया आपका पासपोर्ट who can do all this? So, there's so many satsangs, you know, like when now because I've gone on the shipping mode, तो मुझे सब वो on board वाले याद आ रहे हैं. My dad had a heart attack in 98 when he moved to Chandigarh. I was on a ship. मेरी शिप उस टाइम टोक्यो के आसपास में पोर्ट वहां पे थी. तो when I slept that, after my duty, I slept in my cabin. So
Anu had called me up. We have a control room called bridge जहाँ पे फोन था, तो वहां से इसने फोन किया तो मुझे कॉल आई कि सर आपके फोन आया है। उससे पहले गुरुजी ने मुझे मेरे कैबिन में लेटे हुए को मुझे उठाया हिला के। मैं ऊपर गया। I took her call. She said कि dad is not well and he is in hospital and it's very tight situation. मैं चल कोई बात नहीं है, अभी गुरुजी मुझे अब यहाँ शिप पे उठा दिया तो वो अपने आप ध्यान है उनका। अगर वो उनकी मर्जी हुई लाइफ बचाने की बचा देंगे, उनकी मर्जी हुई नहीं तो फिर ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो कहाँ शिप पे बैठे हुए मुझे सोने से, मैं सोया हुआ था, इसके फोन से पहले उन्होंने मुझे उठाया। मुझे उन्होंने मतलब उठा के एटलीस्ट इतनी एश्योरेंस दे दी कि यू डोंट वरी। It's like it's really amazing. There are so many incidents which happened even while sailing also. Connecting to this only heart attack ka daddy ka, Guruji When had asked us to do certain upay for him, and we did that. And after that, after many years, we were sitting in a power state, my mother-in-law and myself, and Guruji said, Auntie, तू अंकल दा टेवा दिखा ला किते भी, अंकल दी उस वेले डेथ लिखी हुई सी। सो जिंदगी बख्शण वाले कौन? परमात्मा ही हो सकता है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ after that he lived for 20 years. 2018 he passed away. 2018, and that's all because of his kripa, with his grace only. And he lived very well. I think only last 1 year he was a little bit in bedridden. But for all of the 19 years he was And the fine. other thing is कि daddy never used to go to Guruji much. पहले शुरू में initially. बात भी कही था नहीं कभी। नहीं. Only once पारस से ब्याह Yeah, yeah. He never believed in any guru and all that. But जिद्दां Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ कि परिवार ਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਲ ਤਰਦਾ ਹੈ। So that is what he has done to our family, whole family. So much so कि later on dad stopped objecting also. ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ में ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ। So once what happened in Jalandhar, we both were to go to Guruji's mandir, and his father asked him कि चलो आज पिंड चलिए। तो he had in his mind कि मंदिर जाना है। So he told daddy कि daddy परसों कल चलेंगे। So he said okay, and we went to Jalandhar Mandir शामी 5 बजे, and as we entered into the mandir, Guruji was standing near fish tank lobby च, and as we reached to him we take matha, he said आज तुसी शहर घुमाओ, and पता कहले सीधे खड़े हो ही गए हैं, तो जाओ आज शहर घुमाओ, तो परसों आ जाओ। So we said नहीं, we will go back, tell daddy everything where we go, and we went back straight home and told him, daddy, this is how we go to Guruji and all that. So we wanted to tell you कि ताकि तो इस करके नहीं दसा ताकि बुरा ना लगे। But then we told Guruji, and after that he never said. We told daddy. Told daddy, and after that he never said anything. So from Jalandhar days only, like my son, we had to take him to YPS for his admission. So he was in 7th class. We went to Guruji Mandir, and before that, when first I met Guruji, Guruji took my father's name. मैंने कि ये हरबंस सिंह दी बेटी है। I didn't tell my father's name. He didn't tell. Nobody told him my. Yeah, I was not there only. You and mommy. Yes, but he just said कि हरबंस सिंह दी बेटी है because I had too much attachment with my father and I had lost him. So by saying that, I felt later on कि the love, the thing I was missing, later on I got from Guruji. The amount of love he gave, so I stopped missing my father also. So that he said, and he filled the thing, and life ठीक चलती रही। And एक दिन बैठे हुए दिल्ली, Guruji asked about my brother, and I didn't say it. They suddenly कहते
he had died in an accident. So he says कि ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. And as a human being, we'll not know about this thing. कि mukti hoi ki nahi, only Guru can know, Paramatma can know where his soul is. And I said, Acha Guruji. But the thing was that ki I used to see my brother in my dreams, and I used to feel the pain of losing him. And after the whole year, once again in Seva, in Empire State, we were sitting, and Guru said, Tere ਭਰਾ ਦੀ mukti kar di. So I said, Acha Guruji. And now after that, Guruji had asked, before that, Guruji had asked me to read Shipuram also. And he said also, Sham de time, he gave me the time of reading Shipuran. Morning time, he gave me something else to do. So जब मैं शिवपुराण पाठ किया पढ़िया फिर समझ आई कि मुक्ति कौन दे सकता है. So Mahashiv, he tried to show time and again who he is. बस समझ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ. So ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਓ. yes, और जब ਹੁਣ वापस सब चीजें सोचते हैं करते हैं तो who can do this? This is not an easy thing to do. कि मुक्ति दे देना, कर्म बदल देना. And Guruji has changed our कर्म. कहते से ना मैं लेख बदल देना. Once sitting with him in Empire State, I asked him after with his grace did Guru Granth Sahib Ji passed, and ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ कर्मा ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. I was sitting with Guruji and I asked, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ thought ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ कर्मा ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, so we do part, we go to Gurdwara, we sit in Satsang and all that. So ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? And then I asked Guruji question, Guruji, Guru Granth Sahib Ji ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ कर्मा ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ. These were his exact words. And this was all his discretion, and he has really done it. He has taken out our chips and cleaned it and put it back in our computers. Rewritten it. Redone it. Yes. So his grace, his meher is apar. Pehle ta, he is not there only to cure the diseases and give whatever we want in life. No, that is his way to just put us on this path, which is his purpose is bigger picture. Purpose of, you know. We used to always say, ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ worldly thing ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਹੀ ਸੈਡ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ. ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ's reply was ਕਮਲਿਆ ਨਾਮ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਨੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ. ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾ ਇਫ ਯੂ ਓਨਲੀ ਡੂ ਦੈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਪ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਪਰ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ. ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ. And I'll repeat the words what he said in Hindi. क्या है गुरु जी? ऐसे बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. Because in earlier part, yes, we used to ask a lot of things, but very soon we came to understanding कि भी मांगना कुछ नहीं है, गुरु जी अगे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है, वो सब जानी जान हैगे आ. And invariably something was like, human being ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, bothering us, but we would not speak. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ.
Yeah. तो ਜਿੱਦਾਂ शिव ਲਾਈਕ ਹੀ जी ਸੈਡ ਕਿ दर्शन। ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। हम्म, तो गुरु जी इज टू से कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। And rightly we all realize till today also there are a lot of times when even after all this we still there are times when ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ initially ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ and we stop ਨਹੀਂ whatever is best Guru ji will do that for you. um, Guruji gave him Shivji's darshan in Jalandhar in initial days only. And ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, and next day morning he didn't tell it to anybody. ਮੇਰੇ mother-in-law ਗਏ and my mother-in-law said, Guruji told my mother-in-law, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ? And Guruji gave him ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ in our bedroom. ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਹਮ ਤੇ ਆਈ ਸੌ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ in his blue color big avatar ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਸ ਮਾਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਕਿਉਰ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਅੱਖ ਕਿਉਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਦੈਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ I saw, okay, where is he looking that way? ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? When I looked over there, Guru Ji was standing. Yellow ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸੀ and this darshan he gave me ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ 95 and first time when I had bade mandir darshan 98 the same shivling which Guru Ji had showed me on his body, on his head in 95. And the chola which he was wearing that day in that live darshan, he gave us the same photo, a photo in 97 blessed by him in the same chola. And I did not choose that photo. It was chosen by some sangat, given to me, and then Guruji blessed it. So he, like, ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 97 ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 95 ਚ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਡੂ ਵਨ ਆਫ ਫਿਊ ਆਫ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਹਰਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੋ ਅਨੂ ਆਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ I used to talking to अनु ने पूछा थी ना मैं दिखाऊंगा और फिर तू बोलेंगी चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा नहीं मेरा चिमटा तेरा चिमटा और मेरी चूड़ी खड़काएंगे and then he laughed and this is a song line from there's a movie Sannyasi in which Manoj Kumar is Sannyasi in that movie so that movie I had seen in my school days we also all laughed कि चलो भी this गुरु जी बड़ा अच्छा एक joke type करता but true to and nowhere in mind this thought came ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਹੁਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਬੜੇ ਬੜੇ VIP ਆਂਦੇ we are just normally ordinary people but 98 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੰਦਿਰ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਲਾਈਕ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ when those things happen then we realize so like cut into your it's okay
So as everybody knows कि गुरु जी दे लंगर प्रसाद दी बहुत ज्यादा महिमा है and गुरु जी used to say संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਹੈ. Only toffees were given. Yes, only toffees were given which we could take home. So once we were going from Chandigarh to Jalandhar and on way I developed this herpes ਜਿਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. And ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ I had to change my clothes also. And ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ went to skin specialist. He said ਕਿ 3 to 4 weeks ਲੱਗਣਗੇ, calamine lotion ਲਗਾਓ. And same evening we went to ਗੁਰੂ ਜੀ's ਦਰਬਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਏ. ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ just I was standing behind ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ I just mentioned ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾ herpes ਹੋ ਗਿਆ. He said ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ. And to Guruji's words, the next day morning they all dried up. I just suffered for one that evening, jada ki burn kar raha si, but usto next day it all got cured just because of his langar. And same way, once I had come from Dubai, I was very unwell. He was to join ship. I was there with him. I came back, and jab bhi asi वापस आना, I used to go straight to Guruji Kol. So we went to Empire State. शिवरात्रि थी, It was महाशिवरात्रि, Mahashivratri to बाद. एकदम बाद. It was 10:30, 11 when I reached Empire State. And ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ. And but I was so unwell. I was feeling कि मैं अगर खाऊंगी कुछ तो मेरा निकल जाएगा एकदम. So I told auntie रहने दो, मेरे से खाया नहीं जाएगा. But Guruji went inside. He had his langar. When he came out and he said, मैं वो आंटी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾ. ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ. But then langar was given to me. I had langar and मैं comfortably ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I felt a little bit uncomfortable, but as the night passed by, I was very much comfortable. And next day I was to take my Shatabdi back to Chandigarh. So Guru Ji de langar च ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, but ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Like once my daughter was very unwell, we were in Jalandhar at that time, and we were not in Jalandhar. My mother-in-law was there, my daughter was there. She was having vomiting, stomach upset and all that. So Guru Ji da Delhi to message आया कि राय आंटी ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. तो ਉੱਪਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ. And my daughter had so much langar prasad that day. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਖਾਈ ਗਈ. And my mother-in-law felt ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਨਾ ਕੁਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ. And I was fortunate enough to have Guru Ji ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ. ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਦ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗਸ. ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਗਲਾਸ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਉਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਮ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਪਿਕ ਅਪ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਪਾਸਡ ਔਨ ਟੂ ਅਸ. ਸੋ when we were in Jalandhar, so ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ YPS, and he went with us to ਮੰਦਿਰ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ. ਐਂਡ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ. ਐਂਡ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ. ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। So, but he said those words, but actually he took over him. took over him. Everything in his life, every moment, every minute. Moment. He decided his career. He decided, he told about his marriage also before Guruji took Mahasamadhi. Everything happened as he decided Still. or as जितना उन्होंने दोबारा लेख लिखे सारे, and still it is happening that way only. So Jalandhar Mandir Chai Guruji, before going to Delhi, Guruji gave my daughter his Juti Prasad, and Guruji gave her his photograph in Empire State Delhi. Bless करके आप bless की थी, it's quite big, and Guruji ने bless करके उन्होंने दी थी. She is in France, she is in Paris. So last August, when we went to her, we took her ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ we were telling her ਕਿ ਅਸੀਂ we will bring it to you. So ਉਹਦਾ frame ਕਰਕੇ we took it there, and ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, after 2 days she gave us the news that she is in a family way. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, and she had a very, very difficult pregnancy. And throughout that pregnancy period, she had been just talking to Guruji, listening to Shabad, and how Guruji took care of everything. The baby doctors were very, very, they warned a lot. She was put on a total bed rest for many months, and she was not to move at all. But though the child was born 1 month early, as doctor was suspecting that, but Guruji's grace, ਬਿਲਕੁਲ heal and hearty. So ਇਹ time Guruji ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, but Guruji knew about the things which were to come. ਜੋ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ yes, yeah, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, we had gone to Jalandhar for a wedding. Guruji ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਦਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ. So on stage, Guruji's one side I was sitting, and other side Nirmal Penji was sitting. So I was holding Prashad the Parat. Guruji was distributing the Prashad, and suddenly Guruji looks at my daughter, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ. So that same thing happened. ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, and suddenly then I told Guruji, ਇਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ. So ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, but by saying that Guruji did something else ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. And once like that we were sitting to Guruji told ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਖਾਣ ਨੂੰ. So Guruji stopped her rice totally, and she also did not have it. But she was very fond of rice. And once sitting in Empire State, Guruji said ki chal ape, and he said ape bina puche dobara, he said ki chal tu chawal kha liya kar. तो देखो कितनी छोटी छोटी गल है, चावल खाना है करना एक परिवार की तरह उस प्यार पूरा फैमिली लाइक नो बोले. He took care of each and everything so much. When she passed her 10th class, so I was to change her school. I asked Guruji the school, because we used to ask him everything. और जड़ी चीज नहीं पूछते सी, he used to ask us then. So I asked Guruji the school बदलना है, कहते हाँ बदल दो, इन्हू भी लॉ कराओ. And she was very good in studies. So मैं लगा कि बेटे दा भी law field उन्होंने चुनिया. Oda bhi, I will just tell how he made his admission possible without giving the entrance examination. That is also another his kirpa. So like this, though these look very much worldly things, but through these worldly things, he was there always like a father guiding us and guiding to the bigger path that he has done. And now we realize more and more the purpose of those things. जितना गुरुजी हुन अपने दरबार च 2 घंटे शब्द लगवांदे,
फिर उस तो बाद गुरु जी ने कवालियां लगा देनी, पंजाबी फोक सॉन्ग you folk songs लगा देने, and he has asked us to read Shiv Puran also. So we from a Sikh family did not know about Shiv ji. Used to feel कि कोई mythology है, ਉਹਦੇ Hindu god ਬਾਰੇ है। हिंदू god है, respect ਸੀਗੀ, but समझ नहीं ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਬਟ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ is full of Guru Mahima, ਕਿ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ we cannot get ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ we all human beings have our karmas, but only Guru can turn it. Guru can change into better karma and hold, and literally ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਈ, so many times ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ through shabad only we used to get our answers. So there was one time in our life कि I used to listen शब्द whole days, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। I was in Chandigarh at that time. So Guru ji called me once, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, and Guru said ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। So then about देखा करते we at home we did not have any ghazal cassette or songs cassette because all changed into shabad, सारी line लगी नहीं हुई दिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸੇਮ months in Empire State. yeah Guru used to go in the evening for his shave to men's jagah yeah ਬਸੰਤ ਕੁੰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ। yes ਇਨਵੈਰੀਬਲੀ used to go in his own car, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ that day he ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ, I used to sit in our ਤੇ car ਪਿੱਛੇ ਅਨੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵਰ ਕੈਸੇਟਸ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਸਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ of course then I when he came back I inquired which all songs are there in his car, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। yeah so like this, and then I realized later on कि मैं इतना ज़्यादा शब्द सुनने लग पई सीगी कि ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। So this was Guruji's way to bring a balance in the life, and ਤਾਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, and the change one used to feel ਇੱਕ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, or now after so many years when we look at our own self, there is a total change of 360 turn, and this who has done? Only Guru ji has done. His grace ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਅਨੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ शिव जी आप गुरु रूप होकर के आंदे, and once sitting with गुरु जी कहते शिव जी ने तो ब्याह कराया, इसका ब्याह भी नहीं कराया। That he said. So ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। So that's the big hint कि शिव who is married, is महाशिव ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। who is so this way गुरु जी बहुत ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, means non stop ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ। So once गुरु जी asked me कि तू दिल्ली आ जा, कल चली जाए वापस। आई सेड फाइन। सो मैं शताब्दी च गई सी, नेक्स्ट डे दी शताब्दी टिकट मैं ले ली वापस। सो वाइल गिविंग आज्ञा गुरु से तेरा की प्रोग्राम है, एंड आई सेड गुरु जी जाना है, क्योंकि आई कुड सी माय शताब्दी टिकट कि मैं तो बुक कराई हुई है अपनी टिकट। अगेन ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि तेरा की प्रोग्राम है। मैं फिर वही आंसर देता है, मैं जाना है गुरु जी, कल जाना है। So third time he again asked me कि तेरा की प्रोग्राम है। फिर मैंने लगा कि कुछ something is wrong which is not right। गुरुजी is asking me again। मेरे फिर निकला गुरु जी जिद्दां तुसी हुक्म करो। कहंदे मेरे नाल इत्थे गल करना, जाना है की हुंदा है कि means even the thing I have decided, I told you you'll go tomorrow, but still it was his will and wish whether to send me back
or not. So this is all his way of telling me I'll add a small one here. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। I'll add a small one here. So when 98 started coming to Empire State, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਬਰਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। That time we both, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ daughter and son yeah, and my mother, we went to Empire State. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ I was waiting ਕਿ ਅਨੂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ normally ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਰਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। That must be 11:30 12 in the midnight। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ YMCA ਐਂਡ CP ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਰੂਮਸ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤੀ। So it is not that he forgot to tell her ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। This is like ਹੁਕਮ। Now when we think back, like Anu said, ki not only us but all the sangat who was in his under his darshan, under this in care, we ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨੇ। So he made us leave everything to him, and now when we realize it, that's a big spiritual lesson in our life, to leave everything to God. Yes. Although we used to leave it to Guruji as a person, but now we realize that he is not a person, he is everywhere, and leaving it to him is like leaving it to God. And so how slowly over the years, gradually he trained us, made us do without us realizing what he's been training us for. ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ used to say ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ used to say also, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ used to say ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, 3-4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਲਿਪਸ ਟਾਈਮ। lunar eclipse ਸੀਗਾ, and we were with Guruji, both of us, in his seva, and after quite an hour or so, and Guruji mentioned ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕਮਾਈ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ we can continue for hours. Yes, we can continue for hours and hours. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। Even now also, every small count is a satsang. 2007 ਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ ਲਈ, it was like ਕਿ how would we live? Like somebody pulled the carpet under your feet, now like ground under from your feet. It was like that, but over the period, Guruji has made his presence feel us more and more around us. And now we feel him all the time with us. Day starts with him, day finishes with him. Anything happens is his blessing, his kripa, whatever he wishes. Something is happening is good, his blessing. Not happening, it means he doesn't want it to happen. और जो भी कोई चीज है, सिचुएशन है, अपने आप अपने टाइम नाल आपे ठीक हो जाएगी। So Guruji has made us very easy, relaxed, जो कि one cannot become like that even after doing so much meditations, and although he's to he gradually takes you there. His purpose is to
uplift us, ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ uplift ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੀ is great, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਖਾਨ ਕਰ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਟਫ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਨਈ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵਾइब्रेशन पूरे वर्ल्ड 'ਚ गुरु जी ने क्रिएट कर देती है कि वर्ल्ड 'ਚ जिथे भी चले जाओ सब जगह गुरु जी के सत्संग हो रहे। एवें ये कोई भी एक फैमिली, एक परिवार नहीं कर सकता। His energy which is doing everything। He's almighty। And he used to say कि उस वेले गुरु जी ने क्या सीगा कि मैं ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ I used to say in Delhi कि मैं पंजाब जाना है, पंजाब जाना मैं है। लोगों ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। So we used to get surprised। और जब गुरु जी ने बड़े मंदिर कहना कि आज इन्ने हजारा संगत आई सी, we used to feel इन्ने तो नहीं है। But then later on गुरु जी made us realize कि जब एक बारी गुरु जी ने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ 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 ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ। गुरु जी, yes। So I think काफी टाइम हो गया। So that's so nice of everyone, and thank you Guru ji, thank you Multilingual platform। हाँ जी, giving us the opportunity to do his गुणगान। जय गुरु। हाँ जी, जय गुरु जी। आंटी जी एंड अंकल जी, बहुत बहुत सुंदर सत्संग शेयरिंग थी आपकी, बहुत ही सुंदर। इट इज you have divine blessings, you have the love of divinity, but aapke experiences are equally divine। and matlab I think all of us were completely mesmerized। Yes। and for that guruji ka bahut shukrana, because yes, his love and his blessings just come shining through your experiences। और आज आप दोनों को महाराज ने चुना हमारे को ये मैसेजेस देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड जैसे आई प्लीज अलाउ मी टू हाईलाइट अ फ्यू things, because there are so many beautiful messages which may many other sangat have also shared, but I think as human we tend to forget, and it is very very important to stay connected to Maharaj and stay connected to what he wishes from all of us। and I think also sabse aapne kaha, which is true, that Guruji said nothing is by chance, everything is by my choice। and dusra jo, because why I say that is, this is Guruji's medium of सबको blessings देने का, याद कराने का, आंसर्स देने का। आज मुझे खुद so many things I have connected to, and I know from within that Guruji is trying to tell me that I'm taking care of those things। क्योंकि आपके मुंह से जो सत्संग हुए, many of them I'm being able to relate to। some things have already happened, कुछ चल रही हैं, and one among them is, जैसे अपने रवि अंकल आपने कहा कि आपकी शुरू में जब गए थे, your vision had a problem, and there was also the vision was blurred, probably, if I'm correct in my understanding। and that is exactly what my son is going through now। and Guruji क्या कह रहे हैं कि 10% है ये, चला जाएगा। so that's how he gives messages, that's how he gives us hope and answers not only our questions but हमारी जो anxiety है, that also he takes care of। and the other thing which I would like to highlight is कि बाहर से तो बहुत कुछ blessings गुरुजी की नजर आती हैं। he cured certain illnesses, and he blesses us with a lot of material things without saying,
बट जो सबसे बड़ी गिफ्ट है महाराज की, जो नामदान वो हमारे मांगे बिना उन्होंने हमें दिया है, and the changes he has brought in us, the positivity and acceptance, जिस वो चाहते थे, that is why गुरु जी के दरबार से बिना आज्ञा लिए हम नहीं आ सकते थे, because he knew what is the right time to go. And so that is also what he has taught us. And so beautifully you said that गुरु जी तब तो शरीर में थे, एंड उन्होंने हमें सिखाया धीरे धीरे कि हुक्म में रहना क्या होता है, एंड नाउ इट हैज ट्रांसेंडेड टू परमात्मा। जो हो रहा है लाइफ में, इट इज बाय हिज चॉइस, सो acceptance has come more naturally to us than probably other people who do not have Maharaj's blessings. So कितना कितना शुक्राना करें महाराज का। We just like you said, there is no ऐसी कोई vocabulary ही नहीं है that we will be able to express that thanks. And your journey has been so blissful that you know, he said for your son, वो तो उन्होंने मुंह से कह दिया कि मुंडा मैनू दे दे. So that, and he's controlling not only his life, I think every aspect of your life and all of us. All of us. We allow him to. He takes care of everything. So lot of beautiful things you said, and I would also like to say highlight, you know, that incident जो आपका passport वाला था एंड आंटी आपका हर्पीज वाला, कैसे गुरुजी ने समझाया कि सिर्फ 10% आप भोगते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ हुई अंकल, आपको भी दैट लिटिल वरी एंड एंजाइटी अबाउट द पासपोर्ट, एंड आंटी यू फिजिकल सफरिंग दैट यू अंडरवेंट, बट सो दैट इज हाउ ही डजंट से, ही सेज ਇੱਥੇ सब प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ है। He to So say this कि is the, yes, this is the 10% only गुरुओं के which is, पास हाँ, उनकी कृपा से सूली का कंडा to बनता say है। कि मैं to say that कि मैं सूली दा कंडा बनाना। हाँ, So now for people who don't know little more Thet Punjabi, Suli is that hanging noose. yes, your noose, yeah, When they hang you by rope. yes, yes, Kanda is a thorn. correct, So if you correct, were to be hanged, I'll turn it into a thorn. yes, Like you were saying yes. it 10%. करेक्ट, बिल्कुल। सो दीज व्हेन आई, जब हम ये सत्संग सुनते हैं, एंड दैट्स व्हाट केम टू मी, दैट इट वाज सो विजिबल दैट इट इज ओनली 10% जो आप भोग रहे हैं। एंड आल्सो यू नो द टाइमिंग इज गुरुजी's. ही सेड मेरे को मंग्या ना करो, आल्सो लीव इट टू मी। सो फॉर अस, फॉर संगत जो हम इंतजार कर रहे हैं महाराज की कृपा का, ब्लेसिंग्स का, it is a lesson and you know, for us to remember that he's not forgotten, he knows us, but the timing is his. Like your promotion आपके दिल में थी, पहले नहीं दिया, 3 महीने बाद दी, so the timing is his. Right. yeah, And right. praise. So you know, these are the things that keep you you know, connected to him and knowing that महाराज क्या हैं, एक you और know. जो मैं करना चाहूँ, गुरुजी अक्सर कहते थे कि साधु भूखा नहीं भोजन का, साधु भूखा भाव का। Yes, So yes. while we do part, while we sit listening to his Shabad, while we do his bhakti, the most important thing is bhav towards him. Yes. You know, जैसा जैसा भाव होता है, जैसा जैसा कनेक्शन है, वैसा वैसे एक कदम हम गुरुजी की तरफ चलते हैं, गुरुजी के 10 कदम हमारी तरफ आते हैं। 10 के 1000 कदम आते हैं। That's what he Yes, used to say. yes. I don't think we can love him ever as much as he loves us. He loved us. No, not ever. And also, I think, अब मुझे याद कर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि you know, auntie just said that he भाव के भूखे हैं, प्यार के, परमात्मा only wants that. और प्यार, You're sitting there. yes, प्यार का ही रिश्ता है. And you know, like you said uncle, कि आपको साल लग गया मत्था टेकने में, but Guruji never took that at all, any offense to it, because he saw the purity of your heart. So that is his Greatness. greatness. उनको मत्था Like टेकना, he has a mortal beings. इसे कोई चीज yes, देते हैं, अगर वो ना करे तो विदिन की क्या समझ आता है, वो आकट में रहता है। right, but he sees from within that you are a pure soul, you are a down to earth person,
but at that time your social conditioning did not allow you to matha teko. So that is what he values, and बिल्कुल सचमुच भाव के भूखे हैं, and that's what he wants. So one really doesn't have to tell him anything. So many beautiful and wonderful blessings. I think uh, not only you, all of us consider ourselves extremely fortunate. और याद आ गया गुरुजी का भी Yeah, बैठे yeah. हुए कि हम लोग जलंधर मंदिर में थे, मैं और मेरे मदर ला। सो गुरुजी थोड़ी देर के लिए हम लोग को बोल के गए कि मंदिर च बैठो, पंजाबी में बोल के गए मंदिर च बैठो, मैं हुणे आया। सो जब गुरुजी चले गए और वापस आए, तो अभी हमारा मन था कि हम और बैठें, क्योंकि वहां पे एक सिंगर आई थी और मेरे मदन लोग को भी लगा कि अब बैठेंगे तो सुनेंगे। तो गुरुजी कहते कि नहीं, राय आंटी चलो, उठो, चलो कर। सो अंकल वेट कर रहे हैं। सो अब हम लोग मंदिर में बैठे हैं, मेरे फादर ला घर पे आ गए हैं, हमको तो नहीं मालूम कि वो घर पे आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। सो मेरे मदर लोग को एकदम से मुंह से निकल के मुझे तो कितना पता। एंड एग्जैक्ट वर्डिंग वर्ड्स कि गुरु नु सब कुछ पता है। इट्स अ वेरी वेरी बिग हिज Yes, yes. मैनू सब कुछ पता है। सो ही न्यू ऑफ एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, और प्रीवियस वर्ल्ड, ऑल In वर्ल्ड्स the ऑफ whole वर्ल्ड। universe he knows. यानी Yes, कहते ना yes. जिन्ने भी 14 लोग है, जो भी है, उन्होंने सारा सब कुछ पता है। बट ये समझ धीरे धीरे आती है जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी प्रोग्रेसेस. Then one realizes in hindsight everything that Guruji said or he was grooming us for. And कैसे शुक्राना करें कि महाराज ने ना केवल बुलाया बट अपने चरणों में अभी तक लगा के रखा है, अपना हाथ मेहर का सब पे है. So I think we really and I think you re-emphasize the महिमा ऑफ लंगर, कि गुरुजी ने अपने मुंह से कह के गए, and his blessings flow through his langar, his chai prasad. So that is also an answer for a lot of people I see nowadays. um, and my sadly, not only the new sangat, some of the old sangat also, they have become a little picky about about the langar. So I think this message will re-emphasize that it's not food, it is No, his it's not. blessings. It's not It is food his at blessings. all. It's Okay? not the shape what you see. Like, we all know, जिसको sugar things to give a lot of jalebis or laddus. Yes, yes. Artificially, a That lot is of your sugar sauce. trust. That is how much do you trust him? Trust him, and then it also Yes. shows you what he's giving you is not what is curing. Is the prasad what is in that is curing you. और आप किस भाव से ले रहे हैं? Are you without questioning, without seeing the pros and cons, if you are just taking it, It's like you're taking a that's poison what is that going time. to work. Yeah. Yes, बिल्कुल. I think Suresh uncle is also probably wanting to say a lot. So I will मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका और महाराज का, that through you he has blessed us with beautiful messages and blessings. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ साडा भी है ये गुरु जी मौका देता है मौका कि देता है to relive those moments again. Once we start telling about his kirpa, his gungan, in that time. we go back to that time of Jalandhar time, Empire State, Whatever. and Chandigarh. So, and the functions we have attended with him, and the birthdays he has celebrated, our birthday which he has celebrated. So we go back so to, much. there are so many satsang, we can still go on for hours and hours. That I'm sure a lot of us have it. Yeah, a lot of sangat Yes. has. We all have it. Yeah. But Yes. No. Thank you. बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना. सुरेश अंकल, I hand over to you. So जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. रवि अंकल, अनु आंटी, बहुत ही प्यारा आपने संगत किया है. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुरु जी महाराज को आप लोगों ने उस टाइम पहचान नहीं पाए, है ना. और हम लोग जो है नई संगत जो है बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने गुरु जी को महाशिव ही माना है गुरु डे वन से, है ना. बाकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो हम लोग आपसे सुन ही रहे हैं.
वो हमारे खजाने हैं। वो खाली खजाने आप लोगों के नहीं है, वो खजाने पूरे संगत के लिए हैं, आने वाली जनरेशन के लिए हैं। Yes, yes. वो तो है जी। अभी जो और संगत, गुरु जी के समय की संगत जो संगत शेयरिंग करती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आने वाली वी ओ अलॉट टू द कमिंग जनरेशन, है ना। तो जो आप लोगों के जो संदेश हैं वो सब आने वाली संगत, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग आपको देख रहे हैं। आने वाली जनरेशन तो मतलब हम लोगों ने कब तक रहना है, आने वाली जनरेशन जो है वो हमें हम लोगों को कहेंगे कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आप लोगों ने अनु राय आंटी से और अपना अ, अ, रवि अंकल जी से इंटरेक्शन किया था उस समय। बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं, जो नई संगत है बहुत भाग्यशाली है कि हमको आप लोगों के सत्संग सुनने को मिलते हैं। चलो जी, ये तो आपकी बड़प्पन है। आपका बड़प्पन है। और कहते हैं ना कि समय और सबका तय है गुरु जी के पास आने का। एंड गुरु जी यूज टू से कि दीदी 10 साल दी भक्ति और मेरे को लांदा है गुरु जी के दरबार में। बिना किसी भक्ति के भी नहीं आप पहुंच सकते, आपका कुछ खाता है हरेक का अपना। सो हम गुरु के दरबार में जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जाते हैं उनकी कृपा के लिए। सो ये तो गुरुजी ने तय किया हुआ है कि कौन कौन सी संगत, और उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई है, तभी तो बड़ा मंदिर में इतने लोग पहुंच पाते हैं, इतना सब कुछ कृपा पा पाते हैं उनकी। वो जो मंदिर बनाया वो ऐसे नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है, आपने वो बिल्कुल ठीक है अनु आंटी। मैं गुड़गांव से फरीदाबाद जाया करता था, उसी रोड से जाता था फरीदाबाद। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बस उसमें आज्ञा नहीं थी, गुरु जी ने कनेक्ट नहीं करना था उसमें। 7 साल तक मैं लगातार गया उस रोड से, लेकिन कभी जब वो जो लोकेशन है मंदिर की उस तरफ, तो बस ध्यान ही हमारा सामने होता था, किसी ने बताया तक नहीं। इस बात का अफसोस है सिर्फ। चलो जब पहुंचे गुरु जी के दरबार में, जब तय है समय ना तभी पहुंचना है, उससे पहले नहीं हम पहुंच सकते। और कई बार कई संगत गुरु जी के पास, आज मेरे पास पे हम लोग मिलते हैं जो गुरु जी के पास 30 साल पहले गए थे, फिर गए ही नहीं बीच में 30 साल। एंड नाउ नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक अगेन टू गुरु रिकनेक्टिंग। जी। अब उनको महसूस हो रहा है, गुरु जी के साथ कनेक्शन फील हो रहा है। सो ये तो गुरु जी की मर्जी है कब किसको है। पर इतना गुरुजी ने एक बार बोला था, मेरे को याद है बड़ा क्लियरली, गुरुजी कहते सी पूरन गुरु कदे नहीं छड़ता। सो वंस ही होल्ड्स द हैंड, हम छोड़ छोड़ सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, पर वो दाता नहीं छोड़ते, वो मालिक नहीं छोड़ते। और हम लोग जितने भी साल रहे ना गुरुजी के प्यार के साथ रहे एक्चुअली। इतना प्यार था कि हम एवरी थर्सडे चंडीगढ़ से गुरुजी बुला लेते थे दिल्ली, और फिर संडे को छुट्टी देनी, बच्चों को स्कूल भेज देना। वो भी वो इंस्ट्रक्ट करते थे जाके बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के स्कूल भेज दी। हु विल डू इट? आइदर ए मदर और फादर विल टेल यू कि घर पहुंच के एंड दे मतलब स्कूल छੱਡ के फिर बाकी अपने काम करें। सो ऐसे हर चीज, एंड गुरुजी फोन करके पूछा करते थे चीजें, तो वो कौन कर सकता है। सो गुरु ने एक गुरु की तरह गाइडेंस दी, गुरु की तरह अंदर संभाला, गुरु की तरह एक मटके को हाथ रख के ऊपर थपेड़े भी मारे, तो शेप भी उसको दी। पूरा परमात्मा गुरु रूप में आके संभाला भी, और एक प्यार भी बहुत दिया, बहुत ज्यादा, और प्यार करना भी सिखाया, है ना। ठीक है आंटी। आंटी एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं हाँ सिर्फ? जी। सिर्फ एक क्वेश्चन। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, निधि शर्मा जी को होस्ट होस्ट बना देंगे प्लीज, निधि शर्मा। आई एम सॉरी, वी विल बी टेकिंग ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम निधि शर्मा। बाकी संगत जी प्लीज। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी आंटी जी अंकल जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इस नई संगत से जुड़ी हूँ। मेरी बेटी 5 साल की है। उसे बचपन में बहुत बीमारी थी, वो अभी चल नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, बट उसे समझ सब है। मैं गुरु जी के शरण में जब से आई हूँ, मुझे इतने डॉक्टरों के पास में गई, उसकी सारी रिपोर्टें निकाली, उसे कुछ नहीं है, उसका ब्रेन एकदम अच्छा है, बस वो फिजिकली वीक है, मतलब उसके मसल्स वीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, मुझे बहुत संगत ऐसे कहती है कि आप है ना बड़े मंदिर जाओ। मैं मुंबई रहती हूँ, मैं यहाँ गोरेगांव में जो बड़े मंदिर है वहां जाती हूँ, बट मुझे सब कहते हैं कि तुम है ना अपनी बेटी को गुरु जी के मंदिर लेके जाओ, बड़े मंदिर, उनकी 5 सीढ़ियां चलाओ तभी तुम्हारी बेटी चलेगी। मैं बस वही जानना चाहती हूँ, क्या क्या मेरे जाना इतना जरूरी है छोटी सी बच्ची को लेके वहां? तभी ही वो ठीक होगी या कैसे होगा?
मैं कभी कभी बहुत डरती हूँ इस चीज को लेके, मन में बहन माँ हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर डर भी लगता है, तो मुझे आप प्लीज गाइड कीजिए। यू वांट टू एज पर लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग जो गुरु जी ने हमें दी है, गुरु जी इज ऑल लव, नो फियर ऑफ एनी काइंड. Guru used to say, I'll do it in English for you. You can sit anywhere and you can pray to any God. Sit, be in your home, pray to any God. You don't have need to come to me also. ये तो घर बैठे पाठ करो, जिन्हों भी मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, मेरे को बुलाने की लोड़ नहीं. This is his words. This is not my understanding. My understanding is गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में इतना प्यार दिया है कि वी एज अ ह्यूमन माँ बेटे को नहीं कर सकती, आप बच्चे को नहीं, बच्चा को नहीं करेगा. तो गुरु इज ऑल लव, It is have no fear. it is all your prayers, your bhav. If you can go to बड़े मंदिर, टेको मत्था. बड़े मंदिर is blessed for everybody who goes over there. 5 स्टेप, 2 स्टेप, 1 I would very sorry to recommend. I would never think on those lines. और कुछ बुरा नहीं होगा. गुरु जी किसी का कुछ बुरा नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते. गुरु जी ने अपने हमारे साथ, गुरु जी कभी किसी को बुरा नहीं कहा. किसी को गुरु जी यूज्ड टू से ये ग्रह मारे, नो ये स्टार्स आर बैड. तो आई थिंक It is गुरु जी को कहीं भी बैठ के प्रे करो, गुरु जी को पॉट पे भी बैठ के याद करो तो गुरु जी वो भी सुनते हैं. यू शुड बी योर कनेक्शन स्ट्रेट. तो उनकी टीवी ऑन है हर वक्त, हर इंसान के लिए. वो तभी तो परमात्मा है, क्योंकि हर एक को देख सकते हैं वो. उनको पता है कौन क्या भाव है, किस उससे करे. तो कहीं भी बैठ के प्रेयर्स करो. प्रेयर्स आर सच्चे दिल से, प्रेयर हर जगह एक्सेप्टेड है. बाकी जो उनका दायरा है, उनके करने की बात है, उसमें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता. वो उन्होंने ही करना है, गुरु ने ही करना है. Thanks a lot. Thanks a No, lot. uncle, may I take the liberty to say that निधि आंटी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के दरबार में छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे, और गुरु जी ने अपने मुंह से कहा कि बच्चियां नु ते जो बूढ़े लोग हैं और जो बीमार हैं, उनके मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मैं उनको घर बैठे ब्लेस करता हूँ. तो आप प्लीज अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में मत डालिए और माइंड में कोई टेंशन मत लीजिए. You just pray to Guruji. He knows, but the timing is his. Just pray to Guruji, and he has given you the hope that all reports are okay. Leave it to him. That is the faith. उनको यही चाहिए. भाव का क्या मतलब है? Trust him. Yeah? थैंक यू, शुक्राना. प्रेयर्स की गुरु जी आपकी we मदद pray करें. for your child. थैंक यू. जय गुरु जी महाराज. अनु आंटी, रवि अंकल, गुरु परिवार आज निहाल हो गया आपके संगत चरित से. बहुत जल्दी ही गुरु जी महाराज की तरफ से आगे आने पर आपको आमंत्रित किया जाएगा. जय गुरु जी. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you Lord Tanuja aunty for your diversified narrations. Thank you. बहुत अच्छा लगा. Uncle, it is my seva, and बहुत शुक्राना महाराज का that he has blessed me these beautiful moments. And you know, when you are listening or you are totally engrossed in satsang, means Maharaj की energy is flowing through you. So बहुत शुक्राना महाराज का and multilingual team का. शुक्राना गुरु जी. संगत जी, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं. सबका वो टाइम अपना फिक्स होता है. तो अभी जो जिन संगत के हमने क्वेश्चन नहीं लिए, प्लीज गुरु जी से आज्ञा नहीं थी इसलिए नहीं लिए. जय गुरु जी. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे.